Hello, welcome dear students, welcome back with another video. So in this video we're going to understand that what is the difference between the air pressure and the atmospheric pressure, and are they the same things, and how are we measuring them, and how we human beings are being affected by the air pressure or the atmospheric pressure. Is it really important for us on the sea level? Sea level means like the ground level where I'm sitting over here, because I'm not that much above the sea level. My altitude is not that much high. I'm from Hyderabad, so probably Hyderabad is only 10 meters above the sea level as per I googled it. Maybe the numbers are changed. I don't know. So you can do that research on your own as well. Acha. So let's try to understand the air pressure now. First, what we're going to do is that we're going to read the literature given in the book. All right, that's the easiest and simplest way that I recommend the students that Google पे जाने से पहले book का पढ़ लो, because book में already बहुत अच्छे तरीके से clearly explained होता है. And if you don't understand the difference, then you might want to go to Google. But even that job, I'm going to do it for you. Don't worry. Okay. So air pressure. Let's try to understand that. So what it says over here, that air has weight. हवा में वजन है. पहली बात तो ये. So it presses down the earth's surface and on everything that is on the surface, including of us. अब बोल रहा है, what it's saying over here, that air has a pressure, air has a weight. So हवा में वजन है. So that is pushing down the surface of the earth. The earth's atmosphere is pressing it down, and it's also pushing down whatever thing is on the surface, including us as well. Acha. Now it's saying more over here. Now it's saying over here is that the weight of the air pressure varies according to the temperature of the air and the altitude. Very simple. It's saying over here that the air pressure it changes. ये vary करता है आपके टेम्परेचर पे और आपके एल्टीट्यूड पे. भाई देखो, टेम्परेचर तो बड़ी सिंपल चीज़ है, राइट? कि वेदर यू लिव इन अ हॉट area or whether you live in a cold area, उस पे measure करेगा. कैसे measure करेगा? We'll try to understand that as well. We're going to go in a deep explanation about it. And then आपके altitude पे, altitude वही बात आ गई कि sea level समुंदर की सतह से कितना ऊपर या कितना नीचे. Alright? So for instance, let's try to understand this thing that if you go on the mountain, जब आप किसी पहाड़ पे जाते हैं, किसी high altitude वाले area पे जाते हैं, right? यहाँ चले, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एयरप्लेन. ओके, आप एयरप्लेन पे जाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल up above in the sky, right? So there is a different air pressure at that level. अगर आप माउंटेन पे जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट एयर प्रेशर है. अगर आप यहाँ पे होते हैं, so there is a different air pressure. और इस पर दो चीज़ें, और एयर प्रेशर की कम या ज़्यादा होने में दो चीज़ें काम करती हैं. एक तो टेम्परेचर, और दूसरा आपकी हाइट, कि आप सी लेवल से कितना अबव हैं, या लाइक whether you're below. Alright? अच्छा, आई होप दैट्स कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर. आगे आते हैं. अब इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसको हम मेजर कैसे करते हैं. अच्छा, द मेजरमेंट में तो द मेजरमेंट ऑफ द एयर प्रेशर बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बैरोमीटर. सिंपल मर्क्यूरी बैरोमीटर इज शोन इन फिगर 1.12 pressure, 1.12. Now it's saying over here that pressure is measured in units called millibars. 1013 MB means millibars. It's not like megabits, it's millibars is the normal air pressure at the sea level. अच्छा, now देखें, हम पहले एटमॉस्फेरिक पढ़ कर आए थे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी, ठीक है ना? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर में क्या डिफरेंस है? आर दे द सेम थिंग्स और व्हाट, और उनके नंबर्स क्या हैं, और नॉर्मल क्या है, राइट? सी, अभी मैं यहाँ पे अपने रूम में बैठा हूँ. आई एम एट ऑलमोस्ट एट द सी लेवल, राइट? आई एम इन द लो, आई एम काइंड ऑफ एट द लोएस्ट एल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू द सी लेवल, राइट? So at this moment, 1 atm means 1 atmospheric pressure, or 1 atm, 1 atmospheric pressure is equals to 1 pressure, 1 bar, और pressure हम किसे नोट करते हैं? bar से, BAR, bar. So just to confirm, let me just show you this thing as well over here. See, 1 standard atmospheric pressure को ATM बोलते हैं. 1 ATM is equals to 1.01325 bars. Okay, so that's pretty much it about it. अच्छा, अब देखें, दो किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. जब आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लाइक एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर आपने नोट करना है, तो यहाँ पे क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं बैरोमीटर. ओके, अब बैरोमीटर कैसे बना होता है? मर्करी इन ए कंटेनर. हम इसके भी लाइक विल ट्राई टू सी दिस इंस्ट्रूमेंट एज वेल. अभी तो ये इसकी एक 2D पिक्चर दी हुई है. विल ट्राई टू सी अ 3D पिक्चर एज वेल एंड हाउ डज इट वर्क. सो आई एम गोना एक्सप्लेन यू फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट? So what it says that mercury in a glass tube. अब इसमें mercury है, right? And this is a mercury in the container as well. What it does that atmospheric pressure on the mercury forces it up in the tube. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? The height of the mercury is measured against the scale marked on the glass tube. Vacuum in the tube.
sealed at the top. ये थोड़ा सा इसमें vacuum भी होता है and there's a seal at the top as well. Alright, vacuum means there's no air because अगर यहाँ पे air होती तो ये definitely mercury ऊपर नहीं जा सकती थी. So they make sure that there's no air, there's vacuum, like nothing inside it. Okay, so what it says over here, the information is giving over here as well that 86 centimeter, about 34 inches इसकी पूरी height होती है, right? Well, लाजमी नहीं है. It can depend on various sizes and various companies and blah 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 whatever. Okay, अच्छा, so that is how you note the atmospheric pressure. अब एयर प्रेशर पे आ जाते हैं और बड़ा एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. जब भी आप अपने अबू के साथ whenever you go with your father to refill the air and to check the air in your tires, okay, गाड़ी के टायरों में जब आप हवा भरवाते हैं, so they always use a device something like this, okay, to check it. Okay, अब तो खैर डिजिटल आ गए, they have these digital scales over there, but usually you'll see a lot of people checking the air pressure using these. They are called tire gauges. Okay, तो इसमें हम कैसे नोट करते हैं? We note it through PSI. And I'm not going to get into the PSI right now. You can study this by your own. It's also a unit of air pressure. Okay, air pressure कितना है.